I've told you about moment of force, isn't it? Since I told you about moment of force, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And I'd given you the formula for moment of force in anti-clockwise direction, students. So that is called as torque. Okay, in anti-clockwise direction. If it's anti-clockwise direction, I'll take it as positive. And this moment of force is equal to one force into perpendicular distance. Okay. So it's R cross F. Okay. And this will be in terms of R F sine theta, students. Where theta is the angle between moment arm and force. Students, what does this R stands for? Moment arm. Okay. Unit I can consider can be written in terms of Newton meter. This is one of the torque in anti-clockwise direction. Students, anti-clockwise torque are always considered to be positive. And students, when you're giving a paper, at the end of it, try to judge yourself, students. Out of 45 MCQs which were given to you, you try to categorize it. Can you tell me how many questions were there from this thing, CUM? Anybody can tell me? 3 chapters were there, na? 15, yes. 15 So questions. CUM में से कितने थे? Sir, around 15 were only 16 questions. 15 या 20? Perfect बोलो, अभी तुम्हें पता होना चाहिए. How many? Sir, 15. 15. And I said I didn't see the paper at all, frankly speaking, and I'm speaking it out. If it's 15 MCQs, this is how the strategy is. कि ऐसा होना चाहिए, paper should be working out. Circular motion, Sir, 10. 10 only. क्या बात है, I'm bullseye. Okay, and then work power energy, there were 44 questions. Students? Yes, sir, total 45. So there were 9 questions. Sorry, 19. COM, there is 13 questions. 13 questions were there. Circular motion, 13 questions. Okay, 13 questions were there. So work power energy 10, 20, 28, 29, 30. So 15 over here also. The 16. Yes. Yes, sir. अभी मुझे बताओ, how many, just raise your hands. How many of y'all have got out of 15, 12 correct? Raise your hands. Minimum 12 correct. Raise your hands. Out of 13, how many are, none of y'all? See, this is what it is. None of y'all have got it. Over here is a problem. And यहाँ पे तुमने शायद 10 correct लेके आए हो. How many of you have got it 10? So 15 questions are only not there. Pardon? Sir, there were less than 15 questions. Achha, there were less than 15 questions. I thought so there are 15 questions in that case. Oh. Okay, so you all don't know exactly how many questions were there. But मुझे ये बताओ, students, I'm again asking you, which one was tougher for you to handle? COM, circular motion, work power energy. So work power energy. Work power energy. All of you will just speak it out. So work power energy. So work power energy. Okay, many of them are saying work power energy. Yana, what is your call, Yana? Yana, bolo. Sir, work power energy same.
Circular motion was fine. Okay. And COM? That's the questions. Okay. वो तो होना था, that is it. So I told you to 3 questions in this, 2 and 3. The game is 6 to 7 questions ka. So this says that in total 4 incorrect. He got 4 incorrect and 2 unattempted. Okay, fine. And the paper was when exactly, students? कभी था ये paper? 12th. Saturday. Saturday था. हाँ, Yes, sir. Saturday कभी था? Students, those who came for the meeting, was it before meeting or after meeting? Sir, it was after meeting actually. So if it was after meeting, then why do you do such a mistake? मुझे ये पता नहीं चल रहा है. मैंने तभी भी बोला था कि ये पूरा गेम 6 MCQs का है. 6 MCQs का गेम है ये पूरा. Out of 44, you know, how much didn't you think, you know, I should need to go for simply 40 MCQs and I want to get 40 correct? Yeah, I'll go for 37. I want 37 bullseye. Huh? How much did you attempt it? You know? All 44? 29. You attempted Right. 29. Could only attempt 29. So you didn't go for 44. Right. I could not finish my paper. Oh, that means you took an extra time in that case to think. That was short of time. So I don't know about it, whether you're saying it ki 1 or 10 minutes. I don't think so, 1 or 10 minutes. That means again it comes to your preparations then. The preparations were not strong enough for physics. You got 1 or 10 minutes and then to also you're trying to go for only 29 MCQs. That shows that physics was unprepared before the exams. Was not thoroughly prepared. It's a clear one can see that. Okay, Udit says he got all 4 incorrect in work power energy. Fine, students, these are the lessons to be learned. And one thing, kabhi bhi exams tum do na students, so please make a chart. Students, I'm telling you very clearly, एक analysis है. Make a chart. Chart के अंदर तुम वहाँ पे points लिखो कि कहाँ पे तुम लोग ने क्या गलतियाँ की. And that should be a kind of a small booklet in that case. Every major test you go, you just try to browse through it. What exactly you did it. And clearly ask yourself, were you 200% sure before the exams that you know that particular subject or know that particular topic properly? अभी भी मैंने बोला था, अगर तुम्हारे चलो 3 टॉपिक थे तो 3 टॉपिक में से अगर तुम्हें टाइम कम मिल रहा है प्रिपरेशंस करने के लिए या ना इन द मीटिंग आई मेड इट वेरी क्लियर, चलो उस दिन ही मीटिंग था, चलो फाइन, तो यू शुड हैव गिवन टाइम फॉर ओनली 2 टॉपिक्स. तो चलो मैं सीओएम और सर्कुलर उठाता हूँ और उसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे करेक्ट करूंगा. चलो वर्क पावर एनर्जी बाद में लेता हूँ या वर्क पावर एनर्जी और सीओएम लेता हूँ, सर्कुलर बाद में लेता हूँ, जितना उतना देख लूंगा. This is also I made it very clear. Students, make your topics more strong. ये तो सिर्फ 3 थे. Okay, students, let's move further ahead. Henceforth, students, now please work on to all these things. And always before your exam, students solve a particular paper. हमेशा एक पेपर सॉल्व करो उसके पहले. Okay, now this is torque in anti-clockwise direction is positive. Students, it's R cross F, it's RF sine theta. R stands for moment arm. Students, इसको हम बोलते हैं moment arm या turning arm. Students, ये cross product है. That's why the component is sine theta. Theta is the angle between the momentum and the force applied. Hope this part is clear, which I told you very clearly earlier also. If I happen to go for torque in clockwise direction, students, clockwise direction, then as per the sign convention, it's always in negative. And students, torque एक vector quantity है. अगर मैं vector notation डाल दूँ, तो ये vector है. Anti-clockwise को हम हमेशा positive लेंगे, clockwise को हम negative लेते हैं. इसका formula क्या होगा सर? इसका formula भी R cross F होगा. That is momentum into the force applied. And the over here also it's R F sine theta. Theta again is the angle between R and F we consider. So that is what we call as moment of force, students.
And if one asks you what are the factors on which moment of force depends, so there are two factors. The factors which it depends are what? The factors on which it depends are what? It depends on to the momentum. Friends, और ये मैं बता चुका हूँ. Turning arm. Friends, I made it very clear. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम होता, I told you about the handle and the door and the handle. Handle center पे नहीं होता है या not toward the axis. The handle is at the extreme end. अगर तुम तुम्हारे घर के दरवाजे देखोगे तो everywhere the handle is at the extreme end, students. क्यों? क्योंकि तुम्हें लेस अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. वही अगर हैंडल मैंने सेंटर में, सपोज तुम्हारे घर का दरवाजा है, थिंक यू हैव अ बेडरूम का डोर, ओके, और सोचो कि अभी हैंडल सेंटर में लगाया हुआ है, एंड इफ यू वांट टू मूव इट, व्हाट एग्जैक्टली कैन आई से? यू नीड टू अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर दैट. यस, सो इट डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम. It also depends on the magnitude of force applied. It depends on the magnitude of force. That means it actually depends on to what? Point of application of force. And it also depends on to axis of rotation. Friends, if I say it factors are momentum का मतलब क्या? Point of application of force and the position of axis of rotation. Please try to understand this. Friends, ये जो momentum को मैंने यहाँ पे बता दिया है, the other way around. अगर कोई भी रॉड को, अगर मुझे कोई भी रॉड को मूव करना है, अगर मैंने पॉइंट ए यहाँ पे ले लिया है और इस पॉइंट ए को मैं बताता हूं कि ये मेरा नाइफ एज है. Friends, it's a knife edge, it's a fulcrum. Knife edge, fulcrum, pivoted end, turning point. Friends, ये चारों एक ही वर्ड है. तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो now if I happen to draw this becomes my axis for the rod to rotate about point A. तो अगर मैं बोलूं मोमेंट आर्म का मतलब क्या, तो तुम सिंपल बोलोगे मोमेंट आर्म का मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. देखो ना, पोजीशन यहाँ पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. और अगर सपोज मैंने फोर्स यहाँ पे ले लिया एट पॉइंट 1, तो क्या होगा? ये होगा मेरा मोमेंट आर्म, ये मेरा R1 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स? अगर सपोज मैंने फोर्स यहाँ पे ले लिया तो देखो ये होगा मेरा मोमेंट आर्म R2. लेकिन कहाँ पे तुम्हें टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम मिलेगा? एट 3, एट R3, एट R3 for constant force, turning effect is maximum. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Can you repeat? Yes. I repeated, that is suppose अगर ये पूरा रॉड है, इसको रोटेट कराना है. स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये रॉड है, ये एक्सिस है और उसको मुझे रोटेट कराना है. एग्रीड? तो ये मेरा पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ? ये मेरा हुआ टर्निंग पॉइंट हुआ. लेकिन अगर मैं फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो भैया मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज पॉइंट 1. फिर मैं फोर्स यहाँ पे कर रहा हूँ पॉइंट 2 पे, फिर मैं फोर्स अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ एट 3. मुझे बताओ कौन से पोजीशन पे तुम्हें टर्निंग इफेक्ट सबसे अच्छी तरह से मिलेगा? मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट एट ए डिस्टेंस 3. R1, एट ए डिस्टेंस R2, एट ए डिस्टेंस R3. तुम बोलोगे R3, लेकिन यहाँ पे कीपिंग व्हाट कांस्टेंट? अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट. कौन सा कांस्टेंट? अप्लाइड फोर्स. ठीक है, सिंपल है. अगर सपोज मैंने 10 साल के बच्चे को बोला कि भाई दरवाजा खोलो, 10 साल के बच्चे को, यानी 10 साल के बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ तो वही होगी ना, फोर्स कांस्टेंट है. 10 साल का बच्चा मैंने लिया. अगर मैंने हैंडल यहाँ पे दिया है and I tell that particular 10 years guy to open that particular door, and if the handle is over here, and in the second case the handle is over here, third case the handle is over here, मुझे बताओ that same 10-year kid will be able to open the door more easily where?
3. Third. यानी ये जो तुम जब भी तुम नोट्स वगैरह रेफर करोगे ना स्टूडेंट्स अपने मॉड्यूल वगैरह भी, तो वहां पे ये लिखा हुआ है फैक्टर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इनडायरेक्टली इट डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम। यानी व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट मोमेंटम, फैक्टर्स के अंदर अगर मैं मोमेंटम के बारे में बात करूंगा ना, तो स्टूडेंट्स कीप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कांस्टेंट। और जब भी मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बात करूंगा ना, कीपिंग मोमेंटम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स फिजिक्स में फैक्टर्स ये होता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुना प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, इफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल ए बी सी डी, यानी my formula is having my formula of P depends on to 4. As if suppose if I say my formula is A cube root B by C D, ऐसा फॉर्मूला है मेरा फिजिक्स में। स्टूडेंट्स ये कोई फिजिकल क्वांटिटी और ये फॉर्मूला है। तो अगर मैंने पूछा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच P डिपेंड्स, तो स्टूडेंट्स योर P डिपेंड्स ऑन A, yes. Does it depends on B? Yes. Can it depend on to C? Why not? Can it depend on to D? Why not? But when I'm speaking about one factor, students, it's a must. It's a rule in physics. बाकी 3 फैक्टर को कांस्टेंट रखना जरूरी है, तो तुम उसको समझ सकोगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं उठाता हूं तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का। सब लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट आर द फैक्टर्स इन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, है ना? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कुछ याद आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का? शायद तुम्हारे टीचर्स ने बोला होगा 10th स्टैंडर्ड में माल्ट। Resistance of the conductor depend on the material of the conductor, area of cross section of the conductor, length of the conductor, temperature of the conductor, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो वहां पे तुम्हें फॉर्मूला आता था, सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं एक प्रोपोर्शनल सिंबल में डाल दूं तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो रो क्या बन गया? कांस्टेंट रेजिस्टिविटी। यानी व्हेन आई स्पीक अबाउट resistance for length, keeping material and area constant. When I speak about resistance and of area with area, keep material and length constant. When I take length and area, so when I speak about material, keep length and area constant. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. और ये है तुम्हारा रूल इन फिजिक्स। स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलाज को समझने के लिए मुझे बताओ स्टूडेंट्स, सबसे पहले फिजिक्स में फॉर्मूलाज कहाँ से पैदा करते हैं फिजिसिस्ट? तुम सोचते हो कि इतना सारे फॉर्मूलाज कहाँ से? Students, you can get formulas in physics in simple 3 ways. First and foremost, the simplest way is from definition. Center of mass of a body is inversely proportional to the distance of a point from the heavier mass. आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला मैंने डिराइव कहाँ से किया था? मोमेंट ऑफ फोर्स के हिसाब से किया था। अगर तुम्हें पता है ना, इक्विलिब्रियम बैलेंस लेते हुए मैंने बताया था कि हमारा फॉर्मूला कहाँ से आता है, फिर मैंने उसको रेशियोज में ले लिया था, फिर मैंने उसको कंपोनेंट में ले लिया था। यानी देखो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, सिखाया हुआ है कि यानी तुमको स्टूडेंट्स व्हाट डू दे डू, दे डोंट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, दे डायरेक्टली मेमोराइज फॉर्मूलाज। कहाँ से याद होगा फिजिक्स पे? कहाँ से रहेगा फिजिक्स दिमाग में? Don't treat your physics like your bio. Again, I'm telling you, those students who are treating physics like bio will never score in physics. Bio is different, students. Bio need more of memory. More of memory. Yes, concepts are there, but more conceptual subjects is physics involved with maths. तो वहां पे तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से करना जरूरी है। So first we get it, formulas कहाँ से मिलते हैं? From the definition part of it. Second, तुम्हें formulas कहाँ से मिलेंगे? Factors. कभी भी तुम ध्यान से देखो, कोई भी तुम फिजिक्स का थियोरेटिकल नॉलेज अगर लेते होगे तो वहां पे बोलेगा सो एंड सो डिपेंड्स ऑन टू सो एंड सो डिपेंड्स ऑन टू सो एंड सो, और फिर नीचे एक प्रोपोर्शनल सिंबल आ जाती है और एक फैक्टर आ गया। कांस्टेंट टर्म्स कैसे निकालते हैं? वो बाय एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिसिस्ट, तभी जाके कांस्टेंट आता है। तीसरा तुम्हें फॉर्मूलाज कहाँ से मिलते हैं फिजिक्स में? बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच दे दिया उसको, फिर वहां से कुछ कैलकुलेशंस करके यू ट्राई टू ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन, एंड दैट कंक्लूजन बिकम्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला।
Students, these are the only three ways in which you can get formulas in physics. There are no other ways to get it. So you need to be strong in your maths in order to get in physics also proper. Now, one part also I made it very clear, students, about the equilibrium part also, students, that in case of rotation, because we're speaking about rotational equilibrium, students, the rotational equilibrium में अगर तुम जाते हो तो तुम क्या बोलोगे? What exactly rotational equilibrium is, students? तो तुम बोलोगे, sir, rotational equilibrium is summation of net torque about should be 0, है ना? And that becomes what? Static rotational equilibrium or dynamic rotational since static का मतलब यहाँ पे speed is 0, dynamic का मतलब यहाँ पे the body is rotating with constant angular velocity. Example earth, omega is constant. दोनों केस में तुम्हारा algebraic sum of net torque is 0. हमारे जो भी questions होंगे ना more precisely of static होंगे students. Example में static में क्या बोला था? Static के लिए beam balance. And that goes with what? Principle of moments. शायद बहुत स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, है ना? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढ़ा होगा, सोना ने भी पढ़ा होगा, IGCSE में अच्छी तरह से पढ़ा होगा सोना ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. सोना, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स? Principle of movements. Yeah, you've learned it in class 10. I only know the formula. उनको भी ज़्यादा नहीं था. They give very less everything. My dear Sona, I have many students of IGCSE. I know what exactly the textbooks are. I know what exactly the checkpoints are and how exactly the system of working is. There is a really good conceptual way of approaches also given to the subject. And very, very good examples and good illustrations are given. The books, if one refers, they are all diagrammatically and colorful diagrams also given to have a better conceptual. I only remember it being tough. Principle of moment states that students, the algebraic sum of total moment of force about the turning point is equal to 0. That means if I happen to go for uniform beam, students, अगर मैंने uniform beam लिया है of length L, तो मेरा center of mass कहाँ पे होगा या center of gravity कहाँ पे होगा? L/2 होगा. तो अगर सपोज मैंने ध्यान से देखना, सपोज ये यहाँ पे मैंने अगर फोर्स लिया F1, करस्पॉन्डिंगली ये डिस्टेंस कितना होगा? x1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एग्रीड? नाउ इसकी वजह से क्या होगा? ये टर्निंग इफेक्ट किस तरफ जा रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, द एंटायर सिस्टम इज टर्निंग अलोंग व्हिच? इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? हाँ स्टूडेंट्स, Anti-clockwise. तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम फोर्स लगाएंगे. अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो कहने से यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो शुड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी ग्रेटर और स्मॉलर? अगर मैं फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी स्मॉलर. डिस्टेंस कम हो गया ना तो फोर्स ज्यादा होना चाहिए. स्टूडेंट थोड़ा सा सोचो ना, ये फोर्स देखो क्या दूरी पे है, उसको मुझे रॉड को हॉरिजॉन्टल रखना है, मुझे बैलेंस करना है. तो अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इससे लंबा होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. Sir, Technically, but it would be in opposite direction, right? yeah, so it's, and of course this is going to move in what direction? Clockwise. Forget about this now. See, how's the system moving? Yes. है ना? अगर सपोज मैंने एग्जैक्टली ये डिस्टेंस पे रखा, ये डिस्टेंस पे रखूंगा, तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम होगा. स्टूडेंट्स ये दोनों देखो ना, फोर्स इज अ वेक्टर, लेंथ ऑफ द एरो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड. कुछ समझ में आ रहा है? Yes. लेकिन 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 अगर तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो यू कैन हैव, अगर मैंने एक्सट्रीम में ले लिया तो यू कैन हैव सम लेस फोर्स आल्सो.
That depends how exactly it is. So now when I speak about it, students, what exactly your formula for this will be? Torque in anti-clockwise direction, students, will be equal to torque in clockwise direction. है ना? तो दोनों को balance करना है, students. So what exactly your formula will be? यहाँ पे तुम्हारा formula क्या होगा? Torque in anti-clockwise direction is equal to torque in clockwise direction, students. So 1 force into perpendicular distance is equal to F2 into X2. सिर्फ ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, क्लॉकवाइज किस में होंगे? नेगेटिव में। ये क्या दिखाता है? सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। अगर तुम इसको यहाँ पे ले लोगे तो क्या हो जाएगा? algebraic sum of net torque on system will be equal to 0. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. So Can I- the equation of summation of torque about the pivot point is the principle of moment. Yes. Okay. So whenever you try to think about principle of moments, हमेशा कभी भी किसी ने भी पूछा principle of moments क्या है, तो तुम्हें सिर्फ ये बोलना है for a rigid uniform object, okay, if algebraic sum of total moment of force about that point is equal to 0, if it is equal to 0 and the body maintains static rotational equilibrium or dynamic rotational equilibrium, this is what we call as principle of moments. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students now? Can I erase it, all of you all? ओम, is it clear? ओम, ओम समझ में आ रहा है? ओम, श्रेयाश, अरे अनम्यूट करके बोलो ना। Yes, sir. लेक्चर में तो Yes, हाँ तो sir. बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा तो अभी बोलना प्लीज। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इरेज कर दूंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ओम, श्रेयाश, अगर फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यानी अगर नहीं समझ में आता तो तुम पूछो करके कि सर इरेज करने से पहले जो भी तुम्हें पूछना तुम पूछ सकते हो प्लीज, एंड फील फ्री इन दैट केस, ओके। अदरवाइज एक दफे इरेज हो गया फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, देन लेटर ऑन यू विल बी अगेन थिंकिंग। तो अगर कुछ भी शोना, इवन यू आल्सो, if anything you are not able, first of all you entered late into the lectures, very late you entered into the lectures. I should not allow to enter in late. लॉक करना चाहिए मीटिंग को, है ना शोना? Yes, sir. हाँ, ओवरस्लैप, रात को मूवी देख रहे थे। No. हाँ सच्ची बोल, हाँ ना शोना? No, everyone in my family was watching. I was sleeping. you what you were doing? You were doing physics, even you were watching? I slept. Okay, इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. Okay. Okay, now students, we go for the next concept is couple. Friends, can you tell me what is couple in terms of physics under rotational motion? Under the heading of rotational motion, students, what exactly mean by the term couple? So two equal and opposite forces acting to bring about rotation. Okay, two forces equal in magnitude, opposite in directions, acting at any 2 point along a rigid uniform beam, other than its center of mass. Fair enough? अभी ध्यान से सुनो students, let us understand the concept of couple. Couple का मतलब क्या हुआ मालूम है? Total moment of force. Students, अगर मैंने सिर्फ moment of force बोला तो वो क्या है?
मोमेंट ऑफ फोर्स यानी क्या हो जाएगा? टॉर्क। एग्री? ये हम क्या कर रहे हैं? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में जा रहे हैं स्टूडेंट्स। कपल इज टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स? इसको कैसे समझते हैं स्टूडेंट्स? नाउ आई विल ट्राई टू ड्रॉ 3 डायग्राम्स। सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक रॉड लिया, रिजिड यूनिफॉर्म रॉड, ओके, यहाँ पे भी मैंने रिजिड यूनिफॉर्म रॉड लिया, इसी रॉड को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके, लेट अस सी द लेंथ ऑफ द रॉड इज L। स्टूडेंट्स अगर मैंने ये रॉड L लिया तो कहना से यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई कैन कंसीडर। इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे। अभी सपोज मैंने इस रॉड को, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, अगर इस रॉड को मैंने फोर्स इस तरफ अप्लाई किया, ओके, तो कैन आई से द रॉड इज गोइंग टू अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, एंड दैट इज व्हिच डिस्प्लेसमेंट? लीनियर और ट्रांसलेशनल, है ना? That means the rod will undergo what kind of motion, students? Rod will undergo what kind of motions? The answer will be translational motion. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने फोर्स इस तरफ अप्लाई किया, एग्रीड, तो क्या होगा? इस तरफ अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ही होगा, एग्रीड। तो ये भी कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेशन मोशन। यहाँ पे भी है, ट्रांसलेशन मोशन यहाँ पे भी है। अगर मैंने रॉड यहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स, अब देखो ये वाला एक रॉड लिया, ध्यान से सुनना। नाउ सपोज अगर मैंने फोर्स एक यहाँ पे लगा दिया, एक फोर्स यहाँ पे लगा दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों को मैंने फोर्स COM पे लगा दिया स्टूडेंट्स। Two forces of equal magnitude and they are acting in the opposite direction, students. But both these forces are acting exactly at center of mass. क्या होगा? No display. No motion. No motion, यानी यहाँ पे मूव हो रहा है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे लीनियर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे लीनियर नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कहने से इट्स एट रेस्ट। Yes. आया ना? Yes, sir. लेकिन अगर यही दो फोर्सेस को मैं चेंज कर दूं स्टूडेंट्स, इसका पोजीशन चेंज कर दूं फॉर द सेम रॉड, now see this is the center of mass, total length is L, but now suppose if I give, say this is center O, now if I say this is end A, this is end B, if I try to shift the two forces, एक force अभी मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट्स, दूसरा force मैंने यहाँ पे ले लिया, say these are two forces, are they equal in magnitude? आया ना स्टूडेंट्स? are they equal in magnitude? length same है? Yes. Yes. Are they in same direction or opposite direction? Students, are they in same direction or opposite direction? These are two forces. Are they in same direction or opposite direction? Opposite. Opposite direction. Are they acting at any 2 points along the length of the uniform beam? Yes. Yes, sir. यानी देखो ये जो फोर्सेस है ना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे और यहाँ पे भी हो सकता है। लुक एट द ब्लू एंड द रेड पेन, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, एक फोर्स नजदीक एक फोर्स दूर, यहाँ पे भी आ सकता है। Are you getting it? Anywhere. But if I try to go exactly at center of mass, will it undergo any motion? No. No, sir. So यहाँ पे what exactly? How many torques are there? So there are two torques. Students, there are two torques. One torque is due to the applied force F at point of application A. Turning point is O. Students, turning point क्या होगा तुम्हारा? फलक्रम क्या होगा? ये तुम्हारा turning point हो गया, ये तुम्हारा एक्सिस हो गया। तो पहला वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा सर? पहला वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा सर? 1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज लेंथ AO। एग्रीड? Yes. Yes, sir. ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मुझे बताओ इसकी वजह से तुम्हारा बॉडी किस तरफ जा रहा है? ये फोर्स की वजह से इज इट गोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। तो कहने से क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को तुम क्या लोगे? विल यू टेक इट पॉजिटिव और Negative. नेगेटिव? नेगेटिव। तो कहने से टॉर्क 1 will be equal to माइनस, क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes. Please, I'm not teaching hardly 2 or 3. I'm not teaching 2 or 3. The rest of the students. Jana, Vidhi, Udit, Tisha. Tisha, you're not responding at all. Shona, Shreya, Soumya, Parthvi, Om, Khyati,
Aditi हो Yes, ये sir. want to solve. तो ये कौन से डायरेक्शन में हुआ? This is going to go in what direction? Sir, it's clockwise. अभी देखो यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो एक टॉर्क हुआ ना. This torque is one force into perpendicular distance. तो यहाँ पे one force into perpendicular distance क्या है? Length OB. ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट्स? ये देखो यहाँ पे फोर्स है, तो ये भी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? Clockwise. ग्रेट, तो इसको भी मैं नेगेटिव लूंगा. आया ना? Yes, sir. So what exactly a net torque? जिसको हम बोलते हैं कपल, जिसको मैं बोलूंगा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स. What is the answer? What is the answer of couple? तो couple क्या होगा? Sir, it will be addition of torque 1 plus torque 2. है ना? Yes. Are both these answers in negative? Yes. Negative को मैं बाहर निकाल दूंगा कॉमन. क्या दोनों में F कॉमन है? हाँ सर, दोनों में applied, क्योंकि applied forces of equal magnitude. Now can I put within the bracket length AO plus length OB? What is length AO plus length OB? Length AB. So now can I say what is the answer of couple? The net torque force into length AB. आया ना? Yes, sir. नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? Clockwise direction. Yes, that means the system undergoes rotational motion in clockwise direction. ये ध्यान में रखना. What is the unit? It's one force into distance, so it's Newton meter. Can I go for gravitational units? Why not? I've given you this conversion of the students: kilogram force meter and gram force centimeter. Students, couple is one force into what? Couple is my force into what? What is this length AB? Is this length AB called momentum? Momentum. Momentum. Students, can I call this as momentum? Yes, sir. No, Suhani, not at all. Suhani, momentum का मतलब क्या है? ये momentum था. हेलो, देखो अभी भी तुम डेफिनेशन भूल रहे हो. Momentum का मतलब क्या? Momentum is the distance between point of application of force and turning point. Momentum is the distance between point of application of force and turning point. This is line of action of force. This is point of application of force. But now when you see, do you see in the formula over here as AO? No, sir. Do you see BO? No, sir. We see AB. अरे सर यहाँ पे तो टर्निंग पॉइंट आ ही नहीं रहा है AB में. ओ यानी it's a product of force into the line joining the two forces. The line joining the two forces. And students, this length AB is now called couple arm and not momentum. क्या नाम दोगे उसको? Couple arm. So you should be very clear. Is the question asked on moment of force or is the question asked on to couple? कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अभी MCQs के टाइम पे तुम्हें क्या देखना है कि have they given the distance between the two forces as so and so? अगर distance between the two forces दिया नहीं, तुरंत तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए couple arm दिया है भाई, यहाँ पे rotational motion होगा. अगर आंसर नेगेटिव में आया तो उसका मतलब क्लॉकवाइज है. अभी देखो स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, अगर तुम्हारे पापा कार चलाते हैं तो एक हाथ यहाँ पे होगा, दूसरा हाथ यहाँ पे होगा, है ना? स्टीयरिंग इट, one force to other force equal in magnitude opposite in direction. What exactly the entire system is set to rotate about given axis? अगर मैं इसको नीचे लूँ और इसके इस तरफ लूंगा तो it will be going in anti-clockwise direction. The answer will be positive. So students, total moment of force is simply considered as couple, and couple is simply defined as the product of. Couple is simply considered or defined as a product of magnitude of any one force. Magnitude of any one force into what couple arm. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Can I erase this? Is this clear to all of you all the students inside the group?
Shreyash, clear hai Shreyash? Yes, sir. Good, very good. Om, Yes, sir. good boy. अभी unmute होना शुरू हुए हो पहली दफे. It's fine, doesn't matter. Tisha, you don't reply. Tisha, what about you, Tisha? Erase कर दूं students इसको? So 1 minute. Done, sir. Okay, students. So this becomes your couple. We consider examples that give you steering wheel of a car, opening a bottle, cap of a water bottle, opening a tap, and getting it two forces. Look at my finger and the thumb. Two forces equal in magnet opposite in direction, and that gives you a turning effect, students. Now, when I was speaking about couple, so how to understand couple, students? I applied force. It undergo translational force on one side, translational two forces at the center of M, COM, no motion. थोड़ा सा भी position change कर दिया, it started to move. So two forces equal in magnitude, opposite in direction, acting at any 2 points. So it's acting on any 2 points along the length of a uniform beam, but other than center of mass. Center of mass पे लगाओगे तो rest पे आएगा. यानी मैं अभी तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता हूँ जहाँ पे ये फोर्स यहाँ पे भी होगा, दूसरा फोर्स एंड पे भी हो सकता है, क्यों नहीं? Okay, so that is what we call as couple, and couple simply we call as moment of force. The sign conventions over here also are exactly same. If I happen to go for clockwise, it will be negative. Anti-clockwise will be positive. Now, when I spoke about couple, students, over here, I took the forces to be acting perpendicularly. Students, always we go for two forces acting perpendicularly will give you a better turning effect, students. But now what happens, students, if the force is it's not perpendicular, it's inclined. Suppose if I happen to give you now a rigid uniform beam, students, okay, ये इसका center of mass है. Now suppose, students, if I happen to give you one force is acting in this direction, F1. Now I'm not taking same magnitude, students. F1 is one force I'm acting it, and it is at an angle of θ1 with the horizontal, students. Another force is acting in this direction, students. Agreed? Now I can, if in case if I want to consider, I can take this as the angle. I'll take this as the angle to make it on an easier side. These are the two ends of the rod, students. This is O, this is point A, this is point B. Students, मुझे बताओ, ये जो force apply हो रहा है, वो force apply हो रहा है point A पे. ये जो force apply हो रहा है, ये point B पे. Can you find out the distance of the point of application of force from the turning? Students, can you find out the distance? Yes. ये डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हो ना. अगर मैंने यूनिफॉर्म रॉड लिया तो आराम से तो मेजर कर सकते हो. यूनिफॉर्म मीटर लॉन्ग तो 100 सेंटीमीटर हो गया. तुम्हें फोर्स का डिस्टेंस बोलेंगे कहाँ पे है, तो लेट अस से दिस डिस्टेंस आई विल कंसीडर विल बी x1. ये तुम्हारा डिस्टेंस x2 है. क्या ये क्लियर हुआ, स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. But now when I speak about for will this kind of force, students, क्या ये forces, look at the point of application of force A. यहाँ पे point of application is B. See the line of action of force. See the line of action of force.
this will give me pure rotational motion? Of course, your body will rotate, but will it give me pure rotational motion? No, for that I need to No. have what? I need to have forces. Perpendicular. Yes. यानी मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? Component. कंपोनेंट्स ढूंढना पड़ेगा. आ गया ना? और देखो, now you should be in vectors. मुझे बताओ ये फोर्स कितना होगा? What exactly component I'll consider will be? F1 sin theta. F1 sin theta 1. This is F1 sin theta 1. और यहाँ पे क्या होगा? F2 sin F2 sin theta. Yes, this is F2. So this is F2 sin theta 2 students. Now if I say what exactly couple over here will be, so can I say this is F1 sin theta 1 into x1 plus F2 sin theta 2 into x2. Agreed? Yes, sir. Now if I say how is the system is going to move, is it going to move in clockwise or anti-clockwise? Clockwise. ये तुम्हारा आंसर किसमें? ये क्या है? मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स. ये तुम्हें मैग्नीट्यूड, अगर कभी एमसीक्यू में मैग्नीट्यूड पूछा तो ये दिखाना है, लेकिन अगर डायरेक्शन के हिसाब से पूछा तो मेरा आंसर नेगेटिव है. This shows direction. What exactly this shows? Direct. और ये क्या दिखाता है? Magnitude. And the unit can be Newton meter or dyne kg. centimeter or kilogram force meter or gram force centimeter. Is this clear? I've given you the conversions also. These are gravitational units and these are units of force. Inertial units. Students, अगर मैंने ध्यान से सुना students, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ F is equal to ma and F is equal to mg, मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? So F is equal to ma is inertial force. Absolutely correct. And F is equal to mg is gravitational force. है ना? ये किसके लिए यूज होगा? कभी भी किसके लिए यूज होगा? बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में होगा. The mass associated for a body having linear acceleration we call as inertial mass, and the corresponding force is called as inertial force. लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को तुमने वर्टिकली नीचे गिरा दिया, सपोज अगर कार सीधी जा रही है तो m है, वही कार सीधे जाते हुए नीचे आ गई, सीधी परपेंडिकुलर आ गई, तो वो क्या बन गया? Gravitational mass we consider. G. And the corresponding force is gravitational force. Agreed? Students, क्या ये clear हुआ students? Is this clear? Can I erase this? No, sir. Then Students, can you solve this part of it? Students, question is students, a uniform meter rule. Since uniform meter rule
having weight. Since a uniform meter rule having weight 50 grams. Okay. A uniform meter rule having weight 50 grams is to be kept horizontal. Okay, that means there should not be any bend in the meter rule. So a uniform, students, a uniform meter rule of weight 50 grams is to be kept horizontal by applying force at one end. Find the magnitude of force and direction of force. समझ आ रहा है students question? The uniform meter rule of weight 50 grams is to be kept horizontal by applying force at one end. I wanted to find out magnitude of force and direction of the force applied. Is the question clear to all of you all? Yes. Okay. So the thing above the 100 centimeters is the weight. Now see. Students, ये तो मैंने डायग्राम दिया है. अगर मैं डायग्राम नहीं भी दूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम मिल सकता है. मैंने तुम्हें डायग्राम देके इजी बना दिया स्टूडेंट्स. A uniform meter rule weighs 50 grams is to be kept horizontal by applying force at one end. If I say applying force at one end, that means at the other end it has to be pivoted. But obvious, है ना? Students, अगर कोई चीज को तुम एक एंड से पकड़ के रखोगे, हेलो, एक एंड से पकड़ के रखोगे तो वो सिस्टम एग्जैक्टली प्लेन नहीं होगा, थोड़ा सा बेंड होगा. इसकी वजह से तो तुम्हें पता होना चाहिए, उसका वेट की वजह से मुझे सीधा करना है. मुझे सीधा करना है. अगर मुझे सीधा करना है तो मेरे को एक यहाँ पे फोर्स लगाना जरूरी है. एट द एंड दैट्स माय क्वेश्चन. मैंने डायग्राम दे दिया अभी. यानी मेरा टर्निंग पॉइंट ये है, फलक्रम यहाँ पे है. मुझे क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द फोर्स अप्लाइड. ये फोर्स अप्लाइड मेरे को कैसे पता चलेगा? लुकिंग एट द स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस में मुझे रीडिंग मिलेगी ना, आया ना. ये रिजिड सपोर्ट को लगा हुआ है. तो कैन यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? अंडरस्टूड द क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स? Friends, is the question clear to all of you all? Yes. Please, everybody, see to that you need to understand the question before you solve it. Sanjana, is it clear? Yes, sir. Parthvi, No, sir. not clear. What is not clear over here? I'm not getting the diagram actually. Okay, चलो मैं डायग्राम बिठा दिया. हाँ, solve the question. वो डायग्राम के ऊपर फोकस कर. दिमाग तुम्हारा डायग्राम पे चलना. This is the question. Now, a uniform meter rule, weight 50 grams, is to be kept horizontal by applying force at other end. Find out the magnitude of force and direction. अभी क्या करोगे तुम? देखो, Yana has got the answer. Arthi, did you get it? मुझे बताओ, अगर कोई रॉड 50, अगर कोई रॉड है वो हॉरिजॉन्टल है तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, है ना. कभी जब भी तुम फलक्रम को यहाँ पे रखोगे, सेंटर ऑफ मास पे रखोगे. Yes. लेकिन अगर उसी रॉड को अगर मैंने फलक्रम को एक एंड पे ले लिया तो डोंट यू थिंक सो कि देयर विल बी स्लाइट बेंड? Yes, sir. तो किसकी वजह से बेंड हो रहा है? किसकी वजह से बेंड हो रहा है? तुम बोलोगे सर इसका खुद का वेट की वजह से बेंड हो रहा है. रॉड का वेट, और रॉड का वेट कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ये है वेट ऑफ द रॉड.
ये क्या हो गया, फल्क्रम। इसकी वजह से क्या होगा, वेट ऑफ द रॉड की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ बेंड एंड दैट मोमेंट्स विल बी व्हाट, क्लॉकवाइज। यस एंड एब्सोल्युटली करेक्ट, यू गॉट इट करेक्ट। ये क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा। ये देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट, इट्स अ मीटर लॉन्ग। आई सेड इन मीटर रूल, मीटर रूल का मतलब ये 0 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है तो ये पॉइंट O होगा, तो ये कितना होगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहने से मेरा x1 50 होगा फॉर W एज अ वेट। ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा कि नहीं, इसके हिसाब से बेंड रहेगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी मुझे बेंड नेचर को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अ फोर्स एट अदर एंड इज अप्लाइड। तुम पकड़ के रखो ना पार्फी, तुम पकड़ के रखो इसको, या तुमने धागे से बांध के ऐसा पकड़ के रखा तो वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो धागे से बांधने से अच्छा मैंने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट लिया और यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस डाल दिया और ये हुक को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये मुझे स्केल बताएगा। तो कैन आई से दिस इज वेट इज 1, दिस इज फोर्स एट द अदर एंड, वेयर इज दिस फोर्स अप्लाइड, एट द अदर एंड। एट द अदर एंड का मतलब x2 कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। Students, the force should be applied at a point and its distance is always from the turning point. This is my turning point, students. This becomes my turning point. यानी अगर मैं इसको point A लेता हूँ, इसको मैं point O लेता हूँ, इसको मैं point B लेता हूँ, तो ये मेरा O होगा, ये मेरा O होगा और ये मेरा B होगा। ये 0 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर हुआ। तो now कहने से मैं x2 is 100 सेंटीमीटर। ये किस तरफ होना चाहिए टू कीप इट हॉरिजॉन्टल सर, इसका फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. नॉट एनी गेट एन आंसर। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स तुम ले सकते हो। क्लॉकवाइज में कैसा होगा सर, ये क्लॉकवाइज होगा एंड क्लॉकवाइज किस में होता है, नेगेटिव में होता है कि आप पॉजिटिव में होगा? हाँ, Negative. तो सिर्फ तुमने क्लॉकवाइज लिखा तो नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है ना। अगर तुम नहीं डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या होगा सर, 1 फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, वेट की वजह से है, into 50 centimeter, and on the other side it's F into what, 100 centimeter we consider. Is that clear? Is Yes, that sir. clear? And मुझे बताओ what exactly the weight will be. Weight is how much is given to you as 50 50 grams grams. into 50 divided by 100. What is the unit I'll consider? This will be again in terms of grams itself only, that is equal to F. 2 zeros will get cancelled. So how much is the force? 25. Will I put gram? स्टूडेंट्स ये जो वेट दिया है ना वो ग्राम्स में दिया है, तो तुम इसको ग्राम फोर्स लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो जानबूझ के मैंने वेट लिखा है लेकिन दिया मैंने मास, लिखा है मैंने वेट लेकिन दिया है मास। लेकिन जब तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये एक्चुअली तुम्हारा 50 ग्राम्स के तुम ग्राम फोर्स डाल सकते हो, डजंट मैटर। तो देखो तुम्हारे यूनिट्स क्या होंगे, ग्राम फोर्स इनटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल गेट कैंसिल, इज माय आंसर इन ग्राम फोर्स। इज दिस क्लियर? Yes, sir. So where is the force applied? So your answer will be the direction of the force. Is my answer is in positive? Yes. So where exactly the motion, the direction will be upwards. Agreed. What exactly the force is? 25 gram force. You can consider. And 1 gram force is how many times? 980. क्या ये clear हुआ students? So here, the direction for weight is not to be mentioned like negative because it is Pardon? clock. No, I've written clockwise, no? Since I'm using the word clockwise. Are you getting it? So I will not put the negative sign over here. Anti-clockwise is always positive. मुझे anti-clockwise चाहिए था. So why did you take the distance as 100 centimeter?
Of course, see the force is applied. This becomes my point. I told you very clearly, point of application of force, which is the turning point. Where is the system turning about? Is it turning about O or turning about A? Where is the system turning about? Sir, A. A na. So what is my momentum? What is my momentum will be? ये मेरा momentum होगा. How much is that? 100 centimeter. Are you getting it? Yes, sir. Student, ये क्वेश्चन कपल का नहीं है. कपल में पूरा सिस्टम एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो पूरा क्लॉकवाइज जाएगा या पूरा एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा. स्टूडेंट्स, तुम्हें इसका आंसर अगर तुम देखोगे, चलो तुम्हें ये कंसेप्ट, ये एक तरीका मैंने बता दिया. अभी देखो, अभी सपोज तुम्हें ये फील होता है कि सर यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, जो सुहानी ने रेज किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना. सी, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये वेट की वजह से मोशन किस तरफ जा रहा है? clockwise. ओके, सो इसको मैं लेता हूँ टॉर्क 1 और इसको मैं लेता हूँ टॉर्क 2. व्हाट इज टॉर्क 1? माइनस W into x1, है ना? So one, you are trying to say that only. So minus 50 gram force into 50 centimeter, है ना? So what is my answer? Minus 2500 gram force centimeter. Torque 2 क्या है? कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज आया ना? उसका डायरेक्शन चाहिए मुझे. आई डोंट नो. वेल, कंसिडर सिंपली f into what? x2. How much is f? How much is f? तो इसका भी डायरेक्शन में नहीं है. मैं सिंपली w into x1 लेता हूँ. w into x1 और ये f into x2. How much is f? मुझे नहीं पता. x2 कितना है? 100. तो ये भी आंसर किसमें होगा? Agreed? Yes. Now for is the rod kept horizontal? What did I ask you? To keep the horizontal. To keep it horizontal means, can I say algebraic sum of net torque should be equal to 0 for the system to be in equilibrium? Yes, sir. That means summation of net torque should be equal to 0. Agreed? Yes, sir. Now if I consider, अगर ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज में, तो ये तुम्हारा नेगेटिव में है. मैंने ये लिखा, फिर मैंने नेगेटिव डाल दिया. यहाँ पे डालो, एक ही है. तो ये देखो, ये आंसर किस में आ रहा है? टॉर्क 1 किस में आ रहा है सर? माइनस 2500 ग्राम 4 सेंटीमीटर प्लस टॉर्क T2 विल बी इक्वल टू 0. एंड इफ आई टेक इट दिस ऑन द अदर साइड, ये तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा. अभी तुम्हारा आंसर मिला पॉजिटिव में. तो F into 100 is equal to 2500. What is my answer for F? क्या ये क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. So what did I use? I'm using principle of moments. Are you getting it? जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आना तो हमेशा दो फोर्सेस आना स्टूडेंट्स. तो एक को तुम मत देखो ना, एक के ऊपर हाथ रख दो, इसको देखो. तो ये तुम, हाँ सर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर इसको तुम छुपा दो ना, ये कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. तो इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. एग्रीड? So is it clear? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे देखो, फोर्सेस के टेल्स ऐड हो रहे हैं. कपल में क्या हो रहा था? कपल में क्या हो रहा था? हेड्स, टू हेड्स. इज द सिस्टम मूविंग इन वन डायरेक्शन? देखो, है ना? कपल में टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स. अभी देखो ना, सपोज अगर मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट्स, मैंने अगर यहाँ पे ले लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो हेड्स. अगर दो हेड्स मीट हो रहे हैं, दो हेड्स आर एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ रिजिड बीम, दैट विल गिव यू कपल. टू टेल्स, टू टेल्स, टू टेल्स, दैट विल गिव यू मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?
Is it clear? Yes, sir. But they're acting at two different points other than the center of mass. So students, that is very important. इसको erase कर दो students. Yes. Yes, sir. Okay, students. I try to solve this particular question. Okay. Till what time you want me to continue the lecture, students? Students? So 9:15. 9:15. There are just 13 students. 14 is myself. 13 students are only there. Is it fine with all of you students? Because others have exams. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Fine. Okay. So एक last question, students. Now let me see whether you can crack this or not. So ये थोड़ा सा tricky हो जाता है. Okay. ओम अभी इसके ऊपर सोचना. ओम, श्रेयाश, उदित, Shona, are you there? Shona, are you went? I'm there, sir. I remember Alright. this in my physics notebook. Dekha, you remember. Yes, Okay, there's now, so many years since I have studied that, but yes, uh, it is. but you've forgotten now. Yes, I remember now. Okay, good. Okay, now next question, students. A uniform wooden plank. Students, the question is if there is a uniform wooden plank. Okay, think as if this is a plank. A uniform wooden plank is there. Uniform ka matlab, there is a uniform distribution of mass throughout the length of the plank, students. Okay, it's a rigid uniform plank. Okay, a uniform wooden plank of mass 3 kilograms. Okay, uniform plank, mass 3 kilograms, is supported symmetrically by two light identical cables. Okay, now I'll draw the diagram to make it easier. Okay, supported symmetrically. Okay, by two light identical cables, each can sustain a tension of 500 newtons. तो जैसे मैंने क्या किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, okay, दो cables ऐसे लगा दिए students. This is one cable and this is another cable, students. Okay, and these two cables have been connected to a rigid horizontal support. Okay, each cable sustains tension. Capital T, students, stands for tension on time period. 500 Newton. Okay, students. After tying the cables are exactly after tying the cables are exactly vertical and are separated by 2 meters. That means when you tie, the entire system is horizontally considered, and the two cables are at a distance of 2 meters apart from each other. Okay, the ends of the two cables. A boy of mass 50 kilograms, means a boy of mass 50 kilograms standing at the center of the plank. Now suppose if I say this is the center of the plank, point O, a boy of mass okay, of mass 50 kilograms. So mass of boy initially where exactly standing at the center. Let us say it's standing at the center.
Okay, it's initially standing at the center of the plank, is interested in walking on the plank. Now, this boy wants to do a stunt. Okay, he wants to walk, we consider. Okay, so the mass of plank should not be 3 then. It has to be 30 because it should bear the weight. It's 30 kilogram, students. Mass of plank is 30 kilogram. Mass of boy is 50 kilogram. Hope this part is clear. Okay, the plank is connected by 2 symmetrical wires. Okay, bearing a tension each of 500 newton. Initially, a man of 50 kilogram is placed at center of the plank. The distance between the two ends of the tensions is 2 meters. This boy thinks to walk on this particular plank. Okay, is interested in walking on the plank. How far can he walk? How far can he walk? Let us say he walks at a distance x. How far can he walk so that the system still maintains equilibrium? That means still we consider that the plank is horizontal, plank bend नहीं हो रहा है. कुछ समझ में आ रहा है? ये बंदा सेंटर से इस तरफ जाए उस तरफ, मैंने इस तरफ लिया है. जैसे जैसे वो मूव होगा इस तरफ, तो सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स कि अगर मैंने कोई चीज दिया है, इक्विलिब्रियम बैलेंस दिया है और यहाँ पे मैंने वजन बढ़ा दिया तो वो ऐसे होना चाहिए. वहां पे वजन बढ़ा दिया तो ऐसे होना चाहिए. लेकिन मैंने क्या पूछा है, अगर ये बंदा सेंटर से कितनी दूरी पे चलेगा तब तक ये प्लैंक विल मेंटेन हॉरिजॉन्टल. ओके, टेक स्मॉल g as gravitational acceleration as 10 meter per second square. I'll read the question once again, students. A uniform wooden plank of mass 30 kilogram, a uniform plank of mass 30 kilogram is supported symmetrically by 2 light. Students, इनके masses नहीं लेना है. 2 light identical cables, each sustaining a tension of how much? 500 newtons. After tying, the cables are exactly vertical at a distance of 2 meters apart from each other. A boy of mass 50 kilogram is standing at the center of the plank and is interested in walking on the plank. How far can he walk to still maintain the plank to be horizontal? A gravitational acceleration is 10 meter per second square. Students, क्या question clear हुआ? Yes. Hint. जब भी तुम एक टेंशन को देखोगे ना, दूसरे को निकाल देना है और फिर सोचना है. Are you getting it? और फिर तुम जब भी दूसरे को देखोगे तो इसको निकाल देना है. Now, what are the weights that has to be taken care of? How much should be the distance walked by that particular man on the plank to keep the plank horizontal?
Yes, anyone? Shall I draw the diagram, students? Shall I give you a hint by the diagram, students? Students? Tension will be always acting upwards, learned in laws of motion. I सिर्फ diagram दे रहा हूँ, okay? Because already time is getting over, okay? You can solve it later on, doesn't matter. मैं सिर्फ diagram दे रहा हूँ, students. अगर तुम पहला केस को देखोगे ना students, तो तुम ऐसे रखो string को, plank. अभी देखो मेरा कैसे जा रहा है. हेलो. हाँ हाँ बोलो. वो कभी आ रही थी बुधवार आज रात को. हाँ ना आज रात को काले आ काले ठीक है ना काले बता रहा था. हाँ काले काले हाँ अपने टॉकिंग की थोड़ी बड़ी खाली साफ करा. टॉकिंग बड़ी है माय पॉइंट है ना थोड़ा पॉइंट है थोड़ा. ओके हाँ 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 तो वो एक बार. हाँ 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 कोई हाँ हाँ लेना होगा. हाँ 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 कोई वो गैलन लेना है. हाँ हाँ अच्छा मतलब वेट ही होगा करने में. हाँ हाँ
तो नहीं आता क्या? हाँ हाँ कोई बात नहीं। काले बकोल ना वो थोड़ा फोन करो। हाँ हाँ विश के बाद मिलते हैं क्या? तुम्हारे हाँ बरोबर तुम्हारे malo का काले बकोल हाँ 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 देना हाँ बंदा जो नहीं हाँ बरोबर हाँ चलो हाँ आओ very sorry since anybody has an idea for this very sorry since just the hint I'm giving it to you you can solve it at home अगर मैं यहाँ से कट कर दिया students if I cut it think as if I'm cutting it the entire system is going to go in this direction students ये तुम्हारा rigid end है ना ये पूरा motion किस तरफ जा रहा है students clockwise one force into perpendicular distance one force into perpendicular to balance it what I need an anti-clockwise movement students is that clear? Yes, sir. So now if I say very exactly this entire force I can consider. So this is the one force completely upwards. And what is the distance? This much is how much? 2 meter. 2 meters. अगर मैं इसको काट दूं ना students, अगर मैं इसको काट दूं तो can I say the entire system is going to go in this direction? ये कौन सा direction है? This is considered to be clockwise. And this is? Anti-clockwise. Can I equate the two and get the answer accordingly? This is how much? How much is this force? 500. Where exactly is 500 is acting at one end? What is the distance from the other end? Students, ये तुम्हारा this we consider as a pivoted end. Students, the entire system is set to rotate. This is one force. I getting it? And its perpendicular distance we consider from the axis of rotation we consider is how much we take it as 2 meter. ये तुम्हारा 2 meter होगा. यहाँ पे तुम अगर ये लेते हो students, तो देखो one force into perpendicular distance. This is x. For this, the distance is 1. But for second mass, what is the distance? 1 plus x. Is this clear? Sir, here the axis of rotation will be O. Pardon? Here the axis of rotation will be O, right? No, the entire system is set to rotate about which point? If in case if I consider this is my one point I'll consider in this case, point is O itself only I'll consider, but O is the entire mass of the body is acting. So my axis of rotation will be about the suspension part we consider. लेकिन वहाँ पे force act हो रहा है ना upward. तो वो फोर्स मैं जब अगर मैं पूरा सिस्टम को काटता हूं तो ये पूरा रोटेशन हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस. अगर मैं यहाँ पे काटूंगा द एंटायर सिस्टम इज सेट टू रोटेट about this axis I'll consider. So now if I say this is 500 is the total force acting upwards at what distance? 2 meter. So one force into perpendicular distance. These are two forces and these are the corresponding perpendicular distance. Equate the two. Sir, I did not understand that 2 meter and 1 meter. But for anti-clockwise, it has to be 1 meter, right? Which one? For anti-clockwise moments, it has to be 1 meter. And I didn't get you. What exactly we do say? Which anti-clockwise movements? No, we are trying to go for the entire force now. This is one force, entire force. And where is the system turning? When I cut it, during that time, the entire system is set to rotate. The rotation is because when I cut the string,
the entire force की वजह से the system is, and this force is acting at what point? The force is acting at a distance of 2 meters. So this is one force into perpendicular distance. So in one case, I'll consider these two will try to create a turning point over here. And now this is the force which is trying to create a turning point at the same. ये देखो ना, ये दो forces हुआ ना स्टूडेंट्स, ये देखो ना, ये एक force है, ये एक force हुआ, turning point मेरा ये है, यहाँ पे ये एक force मैंने ले लिया, turning point वही रखा मैंने. यानी स्टूडेंट्स try to understand this diagram ऐसा है. Agreed? Now is it clear? This is in what direction? Agreed? Clockwise. This is in what direction? क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? Sir, then how, like in the first case, it is 500 Newton or the tension. Then what? Of course, because the entire weight of the plank was how much? What is the entire weight of the plank? We consider in this case. This is 50, how much it is? 50 kilogram, na? How much is G? 10, na? So what exactly the entire weight is 500. Sir, no, I'm asking what will be the moment arm here. That I'm not understanding. यहाँ पे momentum देखो ना, ये center of gravity है, तो ये momentum 1 meter होगा और ये x meter है. And for tension, man के लिए distance from this is 1 plus x, and plank के लिए only 1, and for this particular tension the total distance will be 2. This is 500. Are you getting it, students? This is my turning point. The entire system I'll consider as rotating about. This is my pivoted end. Sir, This is- but in the second diagram, where is the weight of the boy? My dear, I'm not, see one thing, when I want to speak about turning effect, I don't have to consider the weight of the boy in that case. मुझे इसको बैलेंस करने, मुझे बताओ, ये दोनों फोर्स जब ये नीचे गिर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए कहाँ पे दूसरा फोर्स होना चाहिए? ऊपर की तरफ ही होना चाहिए. अगर मैं ये टर्निंग पॉइंट लेता हूँ, स्टूडेंट्स एवरीबॉडी, अगर मैं ये टर्निंग पॉइंट लेता हूँ, अगर ये दो फोर्सेस प्लैंक को नीचे लेके आ रहा है, तो कौन सा फोर्स तुम पकड़ोगे जो ऊपर की तरफ जाएगा? एक ही पकड़ोगे ना, तुम मैन को भी पकड़ोगे यहाँ पे, तो यही फोर्स होगा ना जो उसको होल्ड करना चाहता है. दैट्स व्हाई द प्लैंक इज हॉरिजॉन्टल. समझ में आ रहा है? ये दो फोर्सेस प्लैंक को नीचे लेके जा रहा है. टर्निंग पॉइंट ये है, प्लैंक को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए ये जो स्ट्रिंग है वो उसको हॉरिजॉन्टल रखेगा. अगर ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है तो प्लैंक विल नॉट स्टे. क्या ये क्लियर हुआ? सेकंड केस के लिए मुझे मैन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट्स हो गया और वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हो गया. So students, there are two kinds of students who have an approach over here. One student will say, sir, I'll cut the string, I'll cut the string in this manner and try to understand that. ये मेरा turning point है. I'll try to go for it. पहले ये वाला cut and और दूसरा वाला cut. I can consider in that manner. Is this clear? This becomes a diagram. These are the two forces. अगर मैं ये simple diagram ऐसे दे देता, तो everybody would have clicked it. सबको आता. वही तो मैंने किया है. जब भी मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या मैं मान ले रहा हूं? मैं ये दो फोर्सेस लूंगा मैं, हाँ, उसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए. अगर मैं इसको नहीं लेता हूं तो इसकी वजह से वो क्या होगा? वो नीचे की तरफ आ रहा है. देखो भैया, दिस इज द वेट ऑफ द प्लैंक एंड दिस इज द वेट ऑफ द मैन. Who makes it horizontal? This one. If I want to go for this, why should I go for these two forces? Now I'm not going to consider this. This force is going to keep it horizontal. ये कौन से डायरेक्शन में चला गया और ये कौन से डायरेक्शन में चला गया? Equate the two. Is this clear, Sir, students? the answer 60 centimeter. Pardon? I will be solving it. Okay, you'll be Okay. getting, will be solving it. Okay. sir, लेकिन क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? sir, here Yes, हुआ. you have taken that left side tension as the point axis of rotation,
and rest everything as clockwise or anti-clockwise force that is acting on it. Of course. In the first case, if the plank tries to go in the clockwise direction, rotating about this, I'm trying to consider there is no tension acting at the other end. But now if I want to speak about which force balances this, it is this force. So I need to cut the total tension and no need to consider the weight. So it's because of this force, the entire beam is set to kept horizontal. Agreed. Look at this diagram now. Why you're trying to think yourself a confusion is there? Look at the pivoted end. Look at the pivoted end in this case. This becomes a diagram to understand this. Two forces, distance from here, and this is one force. Sir, then can't we take the pivoted end as the other cable? on the Which right- one? Second cable on the right side. सेकंड केबल ऑन द तो इसको मत चलो फाइन ना तुम ये मत ले लो तुम ये फोर्स लो ये फोर्स इसको होल्ड कर रहा है and this is the end of it but this will be in same direction I want to keep it horizontal that's why I try to go for this particular force ये force उसको hold करके रख रहा है and there are two tensions acting upwards also I can consider 2t acting in the upward direction so t plus t is balancing what weight plus m ये भी equation है मेरा देखो ना 2t is acting in the upward direction to keep it horizontal man and this will be there एक तरफ मैं इसको 0 ले लूंगा तो मेरा बैलेंस हो रहा है अगर मैं इसको 0 लूंगा तो what exactly consider is this becomes greater there will be motion so one of the tension balances the other two is this clear Yes. okay friends in the next lecture we'll be continuing further that okay Okay, sir.